Usman Bhai kind of comes into picture big time here. Barcelona fan that is, and probably it will be his stage because it is probably make or break for Barcelona. Usman Bhai, I don't know. As in, I don't know. It might come across as banter, but in fact, he. Hello, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Today, we are back with the exciting Know Your Creator series where we bring to you basically a football fanatic. Yes, a fan to a fan, and that can simply be a big football fan or a known content creator on YouTube or any other platform as well. To get to know how and when did they get to know ball, share the story of why they started following the sport, what made them to follow a certain team, and their dream players for the club. Again, we will get to know also about the national teams and much more just in a few minutes. So stay tuned till the end of the video, and before we begin, let's smash that like button as well as subscribe. Do hit that bell notification icon as well, certainly helps, and we'll be back for more. And let's get into it. Hope you relate well to this. Share your story as well in the comment section and share the video. In this episode, we have Daily Football Madness, aka Usman Bhai. Well, he is a massive Barca fan. Yes, a Barcelona fan who is basically from Pakistan but is residing in Germany, I believe. Glad to have him. To check their channel, just check the description below and do subscribe to them. Highly recommended, along with Almighty Blues FC, right? Let's get started. Viewers, we would request you to switch on your closed captions, yes, at the bottom of the screen, so that you can watch this in the language you prefer in. So do set it accordingly. Hello Ankit, thank you so much for inviting me. I was always looking forward to be on your channel. So thank you so much for inviting me. और मेरा नाम उस्मान है and I run the channel by the name of Daily Football Madness. चैनल के बारे में बताऊं कैसे स्टार्ट किया मैंने. I mean it was just about कि फुटबॉल तो देखते ही हैं तो चैनल स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन भी हो जाएगी. मतलब मेन आइडिया जो चैनल स्टार्ट करने का था वो यही था कि लोगों से इंटरेक्ट किया जाए, डिफरेंट ओपिनियंस लिए जाएं, और दैट वाज द आइडिया. तो डेली फुटबॉल मैडनेस का नाम इसलिए डेली फुटबॉल मैडनेस रखा है कि चैनल के ऊपर इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन क्लब. आप अगर चैनल के ऊपर जाएंगे तो यू विल सी के आपको तकरीबन हर तरह की टीम्स को कवर करते हुए मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर तरह की टीम्स जो है वो कवर करूँ बिकॉज आई लव फुटबॉल. सो भाई, आप बहुत बड़े बार्सा फैन हो, लेकिन when and how did you get affinity to the sport first? क्या स्टोरी है, हमें भी बताइए. माई एफिनिटी टू फुटबॉल फर्स्ट बहुत मुश्किल है याद करना. आई थिंक आपको पता है कि जहाँ भी है जो एशियन कंट्री हैं स्पेशली जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप अगर आपके कोई फुटबॉल फैनेटिक ना हो, फॉलोअर ना हो आपकी फैमिली के अंदर, तो आप बचपन से तो फैन नहीं थे. तो मैं तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई एक भी बंदा नहीं था जो फुटबॉल फैन होगा, तो मैं तो बचपन से फुटबॉल फैन नहीं था. इट वॉज ऑलवेज क्रिकेट और मैं स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट हूँ तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है. लेकिन स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस था माई फर्स्ट इम्यूनिटी टू फुटबॉल. उसके अंदर क्या था कि आई थिंक मेरी जो हमेशा से क्या होता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि क्रिकेट को तो क्लोजली फॉलो किया जाता है लेकिन फुटबॉल को तभी ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं जिनकी ज्यादा अफिनिटी नहीं होती जब वर्ल्ड कप आता है. तो मेरा भी यही केस था जब वर्ल्ड कप आता था. मतलब जब मैं 15 साल से छोटा था या 14 साल से छोटा था तो वर्ल्ड कप आता था, तो वर्ल्ड कप देखते थे, खेल भी लेते थे फुटबॉल, जो उसका क्रेज आता था, एंड देन दैट वाज अबाउट इट. उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आई बेसिकली गॉट इनटू इट और कुछ मैचेस पूरे देखे एंड देन आई बेसिकली फेल इनटू लव. और अब अगर आप मेरे से पूछें, एज अ सेड कि मैं स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो फॉर मी द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड इज फुटबॉल राइट नाउ. तो ग्रेजुअल प्रोसेस था. उसके बाद मैंने मैचेस देखने शुरू किए, फिर फॉर्मेशंस का पता चला, फिर प्लेयर्स का पता चला, फिर टैक्टिक्स का पता चला, फिर आई मीन द होल एटमॉस्फेयर जो देखने को मिलता है. आई मीन आउटसाइड से जो आप फुटबॉल फैन नहीं होते तो आप सोचते हैं कि यार गोल नहीं होते, एक गोल हो जाता है, दो हो जाते हैं, मैक्सिमम हो तो चार. क्रिकेट के अंदर चौके छक्के लगते हैं, मजा आता है. बट मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप यू गेट इनटू दिस गेम इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, और इससे बड़ा क्रेज किसी स्पोर्ट के अंदर नहीं है. अब मेरा ये ओपिनियन ग्रेजुअली चेंज हुआ बिकॉज एज ए सेड कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पहले से फुटबॉल देखता हो. बार्सिलोना फैनेटिज्म क्यों, कब, कोई मैच, टूर्नामेंट या मे बी प्लेयर्स व्हिच फैसिनेटेड यू?
Let's remove the obvious ones, but anything that you could relate and maybe the fans could relate. बारसा की जर्नी जो है वो जो फुटबॉल की जर्नी है वो बारसा की ऑब्वियसली फुटबॉल की जर्नी वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कि मैं वर्ल्ड कप देखते जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, क्योंकि यही था, क्योंकि फुटबॉल क्लब फुटबॉल उतना फॉलो नहीं करते थे जब मैं छोटा था, तो फुटबॉल से वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुई है। उसके बाद बारसा, आई स्टार्टेड टू वॉच बारसा गेम, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ऑब्वियसली रोनाल्डिनो तब खेलता था, एटो खेलता था, एंड्री, मेसी ऑब्वियसली बिल्कुल स्टार्ट कर रहा था, लेकिन जो मुझे अच्छी चीज पसंद थी बारसा की वो द गेम प्ले, जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया। और मेरे लिए सबसे बेस्ट गेम प्ले, मेरा अपना ओपिनियन है कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, ठीक है, जहाँ पे आपका कंट्रोल हो, यू आर ट्राइंग टू रिकवर द बॉल, यू आर ट्राइंग टू प्रेस हायर अप द पिच, ट्राइंग टू रिकवर द बॉल इन द ऑपोजिशन हाफ, और आप फ्लूइड फुटबॉल खेलती हैं, जो कि आपको बारसा में हमेशा देखने को मिलती थी। तो सबसे बड़ा जो मेरा जो कनेक्शन डेवलप हुआ था ना, वो मेसी तो तब आ रहा था बिल्कुल, इट वाज जस्ट बिल्कुल अब आ रहा था, और वहाँ रोनाल्डिनो अपनी टॉप फॉर्म के था, बट इट वाज मोर अबाउट कि वो जो कंट्रोल मिडफील्ड के अंदर जो इनिएस्टा, चावी जैसे प्लेयर्स प्रोवाइड करते थे, तो वो सबसे ज्यादा चीज जो है वो मुझे अट्रैक्ट की थी बीइंग अ बार्सिलोना फैन, और तब से मैं बारसा को देखने शुरू कर दिया था। और उसके बाद से जब पेड्रो, डेविड विया और मेसी, चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स से तब तो टॉप फॉर्म थी जो पोजीशन बेस और कंट्रोल फुटबॉल की थी। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही प्यार हो गया फुटबॉल से। सेम क्वेश्चंस इंटरनेशनल टीम्स के लिए पूछा जाए तो क्या जवाब रहेगा आपका? और अगर हम इंटरनेशनल टीम की बात करें तो यार देखें, इसमें अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे मुझे पसंद के गेम प्ले किसका पसंद था, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल पसंद है, तो इट वाज स्पेन। आई वाज एब्सोल्युटली इन लव विद जो स्पेन जो है, जिन्होंने यूरो जीता, वर्ल्ड कप जीता, इट वाज अमेजिंग टू सी दैट टीम प्ले। सो फॉर मी इट वाज स्पेन, अगर आप गेम प्ले की बात की जाए। लेकिन अगर मेरा सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें तो जब मैं क्लब फुटबॉल नहीं भी देखता था ना, तो इंटरनेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखता था, तो पता नहीं क्यों यार एक वो अर्जेंटीना के साथ शुरू से एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि बड़ों से मैराडोना का नाम भी सुना हुआ था, फिर ऑब्वियसली मेसी का भी वो स्टार्ट हो रहा था। तो मैं आपसे अगर मेरे से पूछें तो इंटरचेंज होती रहती हैं टीम्स, लेकिन अगर दो टीम्स का आप नाम पूछें तो इट हैज ऑलवेज बीन स्पेन बिकॉज ऑफ द गेम प्ले, एंड इट वाज ऑलवेज अर्जेंटीना बिकॉज ऑफ वो जो एक दो प्लेयर्स के नाम हमेशा से इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये दो मेरी टीम्स होंगी इंटरनेशनली। नाइस। Did you follow any clubs before, like really closely? कोई तो होगा with a soft corner, right? In maybe other leagues. बार्सिलोना से पहले तो मैंने कोई बार्सिलोना से पहले मैंने कोई टीम मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने फुटबॉल देखना ही बारसा से शुरू किया था, तो ऐसा नहीं था कि बारसा से पहले मैं कोई क्लब फॉलो करता था। इट वाज ऑलवेज बार्सिलोना, पहला जो मेरा क्लब था वो बार्सिलोना ही था। हाँ, उसके बाद क्योंकि आई ग्रू इनटू इट, फुटबॉल से प्यार होने लग गया, मुझे और ज्यादा गेम्स देखने थे, तो प्रीमियर लीग का पता चला, तो प्रीमियर लीग वाज हैज ऑलवेज बीन अमेजिंग। तो बड़े बड़े क्लब रहे हैं प्रीमियर लीग के पिछले 15 साल के अंदर। आप देख सकते हैं कि चेल्सी था, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, सिटी जो है वो ऊपर आ रही थी। तो सॉफ्ट कॉर्नर्स आपके, क्योंकि जो आप ला लीगा, बारसा को फॉलो करते हैं, तो आप अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ ला लीगा नहीं देख सकते, आपको प्रीमियर लीग भी देखनी है, आपको इटालियन लीग भी देखनी है। तो कहीं ना कहीं एक वो जो एग्वेरो का मोमेंट था ना, और सिटी जो है वो टाइटल जीतना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं अंडरडॉग लगती थी, और यूनाइटेड वहां पे डोमिनेट करती थी। तो वो जो एग्वेरो का मोमेंट था ना, आई थिंक बीइंग अ न्यूट्रल फैन, तो वो एक दिमाग में बैठ गया था। तो वहां से एक सॉफ्ट कॉर्नर सिटी के लिए डेवलप हो गया था प्रीमियर लीग के अंदर। एंड ऑब्वियसली नाउ पेप गार्डियोला भी है, तो मुझे वो फुटबॉल भी बहुत पसंद है जो पेप गार्डियोला कहते हैं, वेरी सिमिलर स्टाइल, फ्लूइड फुटबॉल, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। तो एफिलिएशन कहीं ना कहीं रहती है, सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, बिकॉज यू वांट टू वॉच, ठीक है, आपको देखना है फुटबॉल हर लीग के अंदर। इसी तरह 3-4 साल पहले मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इंटर मिलान के लिए डेवलप किया था, जब कॉन्टे ने टुक ओवर किया था, बिकॉज आई वाज बेसिकली, नो डिसरिस्पेक्ट के यूवेंटस, क्रेडिट उनका ही है कि वो जीतती रही हैं इटालियन लीग इतने सालों से, लेकिन मुझे थोड़ी सी डोमिनेंस खत्म करनी थी, तो फिर मैंने सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया। जैसे आप जर्मनी की लीग में, बुंडेसलीगा में पूछेंगे, इट हैज ऑलवेज बीन डॉर्टमंड एवर सिंस, क्लॉप के दौर से आई एम बेसिकली फॉलोइंग डॉर्टमंड, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होती है क्लॉप के अंडर। थोड़ी सी मैं जर्मनी में भी रहता हूँ, तो मैं अभी सोच भी रहा हूँ कि मैच देखूँ जाके डॉर्टमंड का। तो लेकिन अगेन सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं आपके, कुछ लोग एडमिट कर लेते हैं, एक मेन आपका क्लब होता है, लेकिन फिर अगर आप जो लीग में आपका क्लब नहीं है, तो वहां पे आपने किसी क्लब को तो सपोर्ट करना है। तो सॉफ्ट कॉर्नर सबके होते हैं, लेकिन एडमिट कोई नहीं करता, शायद कोई बंदा, लोग वो प्लास्टिक कहने लग जाए या गालियां देने लग जाए इस वजह से, लेकिन आई थिंक सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं हर लीग में, किसी ना किसी क्लब के लिए, हर किसी के। अगर आपके ऑल टाइम बेस्ट 11 प्लेयर्स का है ना टीम बनाया जाए,
So I think we'll be staying here all day long. But which was that one footballing hero of yours? Again, it might be a second hero if it's obvious GOAT. So let's not talk about the obvious GOATs. Why him? मेरा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर इज ऑब्वियसली मेसी. ठीक है, मेसी. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ बार्सा फैन, बिकॉज आई मीन मेरे लिए मेसी हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है. ये सबसे जरूरी चीज है कि यार आपके लिए कोई और प्लेयर है तो आई टोटली रिस्पेक्टेड. आपके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपके लिए किलियन एम्बापे, आपके लिए हालैंड है, ये चीज होनी चाहिए. तो फॉर मी मेसी, क्योंकि वो जो सिस्टम में वो खेलता था, मुझे वो सिस्टम पसंद था. ठीक है, और उसके अंदर वो थ्राइव करता था उस सिस्टम के अंदर. और मेसी फॉर मी कैन डू थिंग्स जो कि कोई भी प्लेयर पिच के ऊपर नहीं कर सकता. दैट मैजिक, दैट क्लोज कंट्रोल ऑन द बॉल, कैसा लगता है कि ग्लू हुई हुई है उसके बॉल उसके पैर के साथ. सो दैट बेसिकली फैसिनेटेड मी एट ऑल अ लॉट. उसके अलावा अगर आप मेसी के अलावा मेरे से पूछेंगे तो मैं एक नाम लूंगा तो लोग थोड़ा सा भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन मेरा सेकंड जो फेवरेट प्लेयर है इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो. वो इसलिए कि यार जो 15 साल से मेसी और रोनाल्डो ने जो दिया है फुटबॉल को, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी प्लेयर ने इतने 15 साल से इतनी परफॉर्मेंस दिया. आई मीन 15 ईयर्स और अभी तक डोमिनेंस कंटिन्यू हो रही है. तो मैं ये बस ये चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरा फेवरेट एवर मेसी है, बट माई सेकंड फेवरेट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो आपके लिए कोई भी फेवरेट हो सकता है, बट एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें. प्लेयर कोई भी आपके लिए फेवरेट हो सकता है. Any recent player who you think can really come up the ladder and maybe reach that rank and deserve that level of recognition from you? अगर आप बहुत रीसेंट प्लेयर के बारे में पूछेंगे तो ऑब्वियसली मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बारसा के वो प्लेयर्स हैं, लेकिन पेड्री या फिर बहुत ही रिसेंटली आप पूछेंगे तो इट वाज गावी, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस रिसेंटली किया. लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्लेयर हैं, मतलब और भी हैं. फोर्डन भी काफी इंप्रेस कर रहा है, फिर मेसन माउंट ने बहुत इंप्रेस किया चेल्सी में, फिर हालैंड, एम्बापे आर ऑलवेज देयर. फिर किएजा एक ऐसा प्लेयर आई थिंक इज वेरी अंडररेटेड और आई थिंक ही विल बी बिग इन फ्यूचर. तो बहुत से प्लेयर हैं, लेकिन बहुत रिसेंट आप पूछें तो इट हैज टू बी गावी. Which has been your favorite manager for the club till date? And which is that one manager that you think कि अगर ये होता तो हमारी क्लब इधर से उधर चल जाती, in a good way, and maybe someone in the future that you would like the club to be managed as well? मेरा फेवरेट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम इट हैज बीन सर एलेक्स फर्गसन. ठीक है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जो उनकी लेगेसी आई थिंक बहुत मुश्किल है मैच करना. ऐसा नहीं है कि उनके पास हमेशा उनके पास बेहतरीन टीम्स भी रही हैं, उनके साथ बहुत एवरेज स्क्वाड भी रही हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा सर एलेक्स फर्गसन. मेरे ख्याल में सर एलेक्स फर्गसन और आर्सेन वेंगर का फर्क सबसे बड़ा ये है कि सर एलेक्स फर्गसन ने तब भी लीग जीती जब उनका स्क्वाड बिल्कुल ही बहुत ही नॉर्मल था. मतलब रूनी और एक आध और प्लेयर के अलावा सारे प्लेयर जो थे वो काफी मीडियोकर थे, लेकिन ही स्टिल वन द लीग. तो मेरे लिए बेस्ट मैनेजर इन द हिस्ट्री विल ऑलवेज बी सर एलेक्स फर्गसन. और कौन सा ऐसा मैनेजर है जो कि मैं चाहता था, इट हैज टू बी क्लॉप. के क्लॉप मैं चाहता था हमेशा से कि क्लॉप आए, और फ्यूचर में किसको चाहता हूँ, अगेन इट वुड बी क्लॉप, क्योंकि आई मीन आई एम ह्यूज फैन ऑफ क्लॉप. मैं पेप का भी बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछें 3 बेस्ट मैनेजर्स तो इट वुड बी सर एलेक्स फर्गसन, देन पेप गार्डियोला एंड थर्ड इज क्लॉप. सो आई वुड लव टू सी क्लॉप मैनेजिंग एफसी बार्सिलोना. ग्रेट टू हियर भाई. बेस्ट मैनेजर होने के बावजूद अब सब प्लेयर्स तो हमारे क्लब साइन नहीं कर सकते, राइट? पर आपको बोला जाए कि आप मैनेजर बन जाओ क्लब के, जस्ट इन केस, लेट्स अस्यूम यू विल, इवेंचुअली यू विल, वी नो दैट, राइट? लेकिन you have an opportunity at any cost to basically buy 6 players for a 6-a-side tournament. Yes, it's just a 6-a-side tournament. Sorry about that, but yes. You have to select 2 players from the past, not from the club you love. 2 players currently, again, not from the club you love, and 2 players from the club you love. Again, in the latest one, among the 2 players, 1 from the past and 1 currently playing. Got it? 6 players, 2 from the past, 2 from current players, and 2 from your current club, right? So again, 4 players will not be from your favorite club and 2 will be. None of the players can be from the ones you have mentioned already in the episode, by the way, yeah? That's the caveat. Viewers, please put in your assembled side in the comment section below. Yes, we would like to see your assembled side in the comment section below as well. It'll be certainly very interesting to see the teams that you have. 6-a-side, remember, 4 not from your club, 2 from your current club, and among the 4, 2 are from the past, 2 are playing currently, and 2 players, 1 is from the past, 1 is playing currently.
6 प्लेयर अगर आप मेरे से पूछें तो 2 फ्रॉम माय क्लब वुड बी मेसी एंड इनिएस्टा. फिर अप फ्रंट आई वुड लव टू हैव अ स्ट्राइकर एंड दैट वुड बी रोनाल्डो, Brazilian Ronaldo, and then on the left side it would be Cristiano Ronaldo. I would love to have Maldini, my all-time favorite defender. I think he was a leader. और मेरे जो third है it is a very close call between Kevin De Bruyne and N'Golo Kante, but I think I will go with Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne भी चेल्सी के लिए खेला तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, तो I will go with the more flair and I will go with Kevin De Bruyne. Wow, interesting. Great side, I must say. And of course, with you as a manager, it'll be even better, right? Anyway, so this was definitely fun to know just as a football fan, inside and out. I believe so. And I hope you enjoyed. I certainly did. By the way, to end, let's actually have you share one last story, one footballing story that you feel, is definitely something that is of a great memory for you and something that the viewers or the fans can relate to as well. स्टोरी तो नहीं है मेरे पास कोई, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि फुटबॉल जब आप देखते हैं तो उसमें किसी भी फील्ड के अंदर अप एंड डाउन आते हैं. जब हम मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखने को मिली हैं बीइंग अ फुटबॉल फैन, और आपको बहुत खुशी भी देखने को मिलती है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के आप फुटबॉल को एंजॉय करें. सबसे पहले आप फुटबॉल फैन हो एंड देन यू कैन सपोर्ट अ कंट्री, यू कैन सपोर्ट अ क्लब. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फुटबॉल को देखें. और टॉक्सिक, अगर आप फुटबॉल फैन होंगे ना तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाएगा जब आप फुटबॉल देख रहे होंगे या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहे होंगे. और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए. किसी एक टीम ने जीतना है, किसी एक टीम ने हारना है. क्रिटिसिज्म अब्यूसिव नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए. आप बात करें, बिल्कुल बात करें. कंपैरिजन छोड़ दें, कंपैरिजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैच पे टैक्टिकली बात करें, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बताएं कि क्या चीज़ आपके ख्याल में नोबडी इज एक्सपर्ट हियर, आपके ख्याल में क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए थी. यार कोई भी मैनेजर दुनिया का मैनेजर फेल नहीं होना चाहता. ऑब्वियसली आप टैक्टिक्स के ऊपर क्रिटिसाइज करें किसी भी प्लेयर के, अगर वो अच्छा नहीं खेल रहा, क्यों उसको अच्छा नहीं खेला, क्या उसको करना चाहिए था, सब के डिस्कशन करें. लेकिन अब्यूजिव ना हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना क्रिएट करें. और ये तभी होगा जब आप फुटबॉल फैन बनेंगे. सबसे पहले और फुटबॉल को एंजॉय करेंगे. Brilliant stuff. Much appreciate your presence and of course the viewers to watch it till now. I hope you all have enjoyed it, and Almighty Blues FC will bring a lot more content. Of course, more content creators, more fans, more previews, reviews, and a lot more. Trivias? How can I forget that? News as well. Do check out both our links in the description below and press that bell notification icon. Certainly helps. And do not forget, do share the video if you like it, and I'm assuming you're already subscribed. Group B, Usman Bhai kind of comes into picture big time here. Barcelona fan that is, and probably it'll be his stage because it is probably make or break for Barcelona. Usman Bhai, I don't know, it might come across as banter, but in fact he Barcelona, again, Xavi being there is great. It's a neutral also, one of the best midfielders of basically modern times. He's there, and of course that mind, the memes have started, Usman Bhai, that Bayern beating Barca 8-0 and whatnot, and I think Lewandowski taking out his anger on Barca. Exactly, because of the Messi saga and all that. And of course, 20 plus years, okay, if I'm not wrong, 21 years since Barca got eliminated in the group stage of the Champions League. Yeah. So, I mean, we don't. Please, Fateh. Yeah, so the last time Barcelona were eliminated was when they were playing Besiktas, Milan, and Leeds. I think in 2001. They went into UEFA Cup, and ever since then, and I remember that season. So I mean, it's unthinkable to have a Champions League knockout round without Barcelona. देखो यहाँ पर शुरू हो गया गौरव का 10-1 maybe. I'm surprised people have forgot 8-2 and they are going for 10-1. नहीं, लेकिन seriously, I mean, what is the tactic? You've seen Bayern, right? So what is the tactic to kind of close down Bayern? The good news for Barca, the only two good news for Barca is, which is not even good enough. Although both good news are not good enough. Kimmich will not be available most probably, and it will be played behind closed doors because of, currently the COVID situation in Germany. So that's actually good news. Because Allianz Arena, the atmosphere is electric at Allianz Arena, and I've been to that stadium and it has been amazing. If you ask me, I think
I have to be very honest. I think there is a more chance that Benfica will drop point. I mean, I have more hope on Benfica of dropping points, drawing and losing, rather than Barca winning against Bayern Munich. Very simple. Obviously, I would be very happy if Barca wins that game, but I only give 20 to 25 pushers. Obviously, there is always a chance in football game, but considering the form on paper, all the analysis, everything, it's Bayern. They were too good. They are too good right now for Barcelona. And Barcelona, if I talk about Barcelona, a lot of injuries. There have been a lot of problems, guys. We don't have a striker. 20 misplaced passes by Depay, who plays as a false nine most of the time. There is no player who can finish. Wingers are injured. Dembele contract situation is in front of us. Ansu Fati is injured. There is no midfielder that can basically create or score goals with will. We have centre back issues. So I mean, the list goes on. So ever since people are hyping, all the Barcelona fans and everyone is hyping Xavi's appointment, and I'm downplaying that, because you have to be realistic. The financial situation of the club, and at the same time the injuries that you have to give time. I mean, there is no quick fix right now, at least 1 year. So in every big game, I say there is a chance, but there is a very less chance. So again, optimistic, but you have to be realistic at the same time. Interesting. Yeah, definitely, with the financial Usman Bhai, situation, Usman Bhai, with the financial situation, this isn't this the most important game of the season, because if you qualify, you make more money. Going out in the group stages, wouldn't that sort of exacerbate your financial problems? Yes, definitely. I mean, I was talking about more for the future, in the near future, the financial situation is not that great. Obviously, it will help if you go out of. I mean, people are asking me, you want to play Europa League or not? I was saying no, because I thought that being a Barca fan, we are not used to playing in the Europa League. But eventually, when I thought about it, I was saying that it will bring money, and Barca are in such a bad position, so why not? So definitely, it's a huge game. But again, I mean, I know we are in a bad financial situation, but I can't just say that we are going to win at Allianz Arena versus Bayern Munich. Obviously, we can, but I can't say that. If I'm analyzing the game, I just can't say that we are winning. Will Bayern play a strong 11? I think they will. They will, because they've already qualified like group leaders, and again, they did have a kind of on paper tough game over the weekend, so it'll be interesting. Like in Barcelona, on the other hand, obviously they lost to Betis. They are 7th in La Liga, so they have a lot of things to concentrate on. So it'll be interesting. Like obviously, I have to big up a couple of people here. Stav, who joined us late. With Stav, big up to you definitely. Of course, Devils United, always supporting the channel, and great channel and themselves. Devils United, do check it out. And of course, Strip Bear, the queen of all bears, is here. She knows her stuff. And yes, Chelsea ladies got on, and we did cover that as well. And of course, the Dugout Football channel, great channel in itself. And yes, talking about Barcelona, the Asian Sensational FC, again a good channel. No way I see Xavi. He heavily relies on inexperienced youngsters, which is stupid. Okay, strong statement that. But Benfica 3-1 Dinamo. Well, that is the thing, right? About, like Usman Bhai said, like it's about Benfica kind of, not kind of winning against Dinamo Kiev. And that is the only scenario that Barcelona automatically qualifies, and that is the scenario that we're talking about, which is possibly a better. But I also have to ask, what should Xavi do? There are no other options. I mean, what kind of players? On bench there are no players, no experienced players, right? So there's no other choice rather than to play them. I mean, Gavi, Pedri और ये सारे players इसलिए आगे आए हैं because हमारे पास options ही नहीं हैं, ठीक है? या तो players injured रहते हैं, या फिर आपके पास options ही नहीं है. So I don't see any other options. लोग criticize कर रहे हैं कि डिपे क्यों खेली जा रहा है. मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास option क्या है डिपे के अलावा उस पोजीशन पे खिलाने के लिए. Even wing पोजीशन के ऊपर भी आपके पास खिलाने के लिए option ही कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? सही बात है, definitely. Let's hope for the best. Again, football romantics, everyone will say that Barcelona at the end of the day are made for the Champions League, but again, there's always a first. In some losses, there's always victories, but it'll be interesting what happens, because like we covered, a lot of different scenarios possibly. And moving on, of course, quickly again, Group F. Fateh, maybe you can pitch in here, because Manchester United, they have already qualified as group leaders. So I don't think Rangnick, possibly he'll use a little bit of experimentation kind of opportunity here.
Villarreal. Now, they are at 7 points. Atalanta are at 6 points. Young Boys are at 4. So Villarreal, Atalanta, either of them, in fact, can qualify, for the next round, and Young Boys can qualify for the Europa League. In terms of the exact scenario situations, Villarreal will go through if they avoid defeat. They will finish third if they lose. Atalanta will go through if they win. They will finish third if they draw. And Young Boys cannot finish in the top 2, like I said, but they will finish third if they win and Atalanta lose. Achha. So Atalanta, I know they got a great victory, over the weekend. Of course, that victory against Napoli was 3-2. But generally speaking, this Champions League did not look the part, Fateh. So what has been missing? So I think it's the defense. Atalanta play this great high press, high attacking, high octane football. But the defense has really been poor. Demirel from Juventus hasn't worked out. You remember they lost their star centre back to Tottenham Hotspur in the summer, and the defense hasn't looked good. So even though Villarreal are struggling in the league, I expect them to score against Atalanta, and that's Atalanta's problem. Even though they'll play well, they'll create a lot of chances. I just don't see how they're going to win. And they did very well against Napoli. They attacked very well, but then again they conceded 2 goals. So I think Villarreal with Unai Emery, past master at this, I think he'll get something out of this game. Man U will definitely beat Young Boys. That first result was as good as it gets for Young Boys. So I think that this group is done. It should be a good game between Villarreal and Atalanta, but I see a 2-2. I think Atalanta will make mistakes. But Atalanta, great. But I think Villarreal again. I think if I'm not wrong, Pino, their winger, he's suspended. So that will be interesting because he's one of their creative players, and they are 13th in La Liga. Terrible that they're doing, but maybe it is just their best chance for another Europa League. Good evening for Mr. Emery, and he's great at that. We know that, and then hopefully, again, I would like to see them in the Europa League. Honestly, if you ask me, Atalanta, the attacking side they are. It's just that Villarreal are made for draws, and that's just me, talking like a neutral, right? But quickly here, Group G. I know Group G is not something that I anticipated to be so interesting, honestly. लेकिन if you ask me, Usman Bhai, Group G काफी interesting हो गया है. मतलब scenario ऐसा है कि in fact all the team is in. Every team is in. So, but I'm very disappointed with Sevilla so far. So because I had I was very sad for them every year that they used to get a very tough group and they used to go to the to Europa League and win that. Obviously, that's good. But this time I was like, okay, come on, Sevilla, you have to top this group. This is the easiest group that you got. They are decent enough in the league, but they were very poor. First 3 games, I think 3 draws and 2 red cards. They were very poor. But I still think that Sevilla will eventually make it. And I think Sevilla are playing Salzburg. I think Salzburg were the better team, but again they are playing against Sevilla. So I think that Sevilla eventually will go. They will use the experience. Salzburg would be very disappointed so far because they had the upper hand, and then they eventually lost 2 games. In the last 2 games, they lost everything, to be honest. And now they are in the situation that they have to play Sevilla. So मुझे ऐसा लगता है कि Sevilla चली जाएगी, and it would be Lille. I think Lille or Sevilla चले जाएंगे आगे. Interesting. And here, obviously, Atalanta to qualify and Villarreal to go to Europa League where they can win. Exactly, that's what I said. And then definitely we would like to see the chat pitching in. Yes, Sevilla are going to Salzburg, and I think Lille are going to Wolfsburg. Very interesting scenario. Talking about Lille, obviously they have great Jonathan David. I know Chelsea Perspective in the chat is a big fan. Jonathan David is someone that, I don't know, he could possibly make a loan move if in case they don't qualify, in January, who knows, just out of the blue. And Adeyemi, I think Karim Adeyemi is a person. So Usman Bhai, quickly again, Karim Adeyemi to Barca, do you see it fitting well? I think it would be a very good move because Dembele's situation is not clear whether he is going to sign a contract. And obviously, if he signs the contract, I'm not sure about what will happen because he's very injury prone. Ansu Fati's situation is still not clear, so we definitely need a player who can play as a winger or also as a striker, as a false line as well. And Adeyemi can definitely do that. But a lot of teams are in also for Adeyemi. So we'll have to wait and see Ferran Torres, Adeyemi. But I don't want to go for both Ferran Torres and Adeyemi at the expense of a centre back. So centre back, either of Adeyemi or Ferran Torres, I will be happy. But right now, if you ask me, I think Ferran Torres because we need I think he can turn into more of a striker.
in comparison to LDME. So yeah, that's my take on this right now. Great.